Hello students, today I am going to start some biology topics related to class 10th. So the first chapter in the biology is life processes. So what is life processes? Actually all the essential processes which are required for the maintenance of life is called as life processes. For example, respiration, nutrition, excretion, transportation, etc. So, the first topic is nutrition. Nutrition. So, what is nutrition? Actually, the intake of nutrient in our body and its utilization is called as nutrition. Nutrition is the taking in food and utilization in the body is called as nutrition. Now, what is a nutrient? Nutrient क्या होता है? Actually, a nutrient is a substance. Nutrient is a substance which an organism obtained from its surroundings and uses it as a source of energy. Any substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy. So that substance is called as nutrient. Now, mode of nutrition. There are two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. So, we will discuss about autotrophic nutrition. Firstly, autotrophic nutrition. In this mode, the organism makes its own food material with the help of raw material. The raw material क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, CO2 and water. ये raw material है. इसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं by using sunlight. Sunlight का भी यूज होता है. सनलाइट को यूज करते हुए रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना भोजन खुद से बनाते हैं. इट्स कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या ग्रीन प्लांट्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पॉसिबल हो पाता है. अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? those organisms which can make their
own food material from CO2 and water in the presence of sunlight are called as autotrophs. Now, what is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment. Chlorophyll is a green pigment which is found in green plants. This green pigment, chlorophyll, is capable of trapping sunlight. So, it is the important feature of chlorophyll that it is capable of trapping sunlight. Now, next is photosynthesis, the process by which green plants make their own food material from CO2 and water in the presence of sunlight is called as photosynthesis. देखिए, photo means होता है light और synthesis मतलब बनना. तो लाइट के प्रेजेंस में जब फूड की सिंथेसिस होती है तो इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखिए, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose is formed and oxygen is liberated. This is oxygen, it's glucose. Glucose is the main product of photosynthesis, whereas oxygen is the byproduct. This is water and this is carbon dioxide. Now, some important feature of reaction. This CO2 involved in the photosynthesis reaction is taken from air. As we know, in air, three main gases are present: oxygen, nitrogen and carbon dioxide. So that carbon dioxide is utilized by plants to perform photosynthesis. Now, water. Water is taken from soil. Soil में जो water available होता है वो plant के द्वारा ले लिया जाता है. Plant में भी जो रूट होते हैं उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर रूट से स्टेम में और फिर स्टेम से फाइनली लीफ में पहुंचता है. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द सनलाइट, which helps in sunlight provides energy. सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है और
Chlorophyll helps in absorbing sunlight. The CO2 is taken through very tiny pores called as stomata. स्टोमेटा के थ्रू CO2 का एंट्रेंस होता है. स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स पर बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. These are called as stomata. Next important feature is the end product of photosynthesis is glucose and oxygen. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. हेडिंग डालिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. देखिए 3 मेन स्टेप्स होते हैं. उसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. आप लोगों को बताए थे कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की. तो दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. सेकेंड स्टेप इज द जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई रहती है उसका कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में. कन्वर्जन ऑफ light energy into chemical energy और उसी के साथ साथ होता है splitting. वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूट करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाते हैं. नाउ द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सेकेंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और उसी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट कर जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और जो थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप है, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ what is the site of photosynthesis? Actually, the site of photosynthesis is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट साइट होता है फोटोसिंथेसिस का. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि सेल में पाया जाता है और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
Now we will discuss about the structure of stomata. In stomata, two guard cells are present. In both the guard cells, chloroplast and nucleus is present. Large vacuole is present, and each guard cell is surrounded by cell wall. So this is the structure of stomata, and this middle structure is called as stoma. तो स्टोमेटा के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. स्टोमेटा इज present at the leaf surface. लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि दे आर वेरी माइन्यूट पोर्स present on the leaf surface. The second feature, stomatal pores are surrounded by guard cells. Third feature, they control opening and closing of stomata. ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. When water flows in the guard cells, it swells and become curved. As a result, pore open हो जाता है. And when it loses water, the guard cells become shrinked. As a result, stomatal pore closed. देखिए बहुत सिंपल सी चीज है. जब गार्ड सेल्स में वाटर आता है, फ्लो करता है, तो ये क्या होता है, स्वेल कर जाता है. स्वेल होने की वजह से जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो गार्ड सेल होती है वो कर्व्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पोर ओपन हो जाता है. और जब इसमें से वाटर का लॉस होता है तो गार्ड सेल्स सिकुड़ जाती हैं. सिकुड़ने की वजह से जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं. स्ट्रेट होने की वजह से कर्व नहीं रह जाती हैं. स्ट्रेट होने की वजह से पोर्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं. नाउ stomata also perform gaseous exchange activity. Now, the broad-leaved plants having stomata present at the lower surface only, and in narrow-leaved plants, stomata present at the both surfaces. तो ये था autotrophic nutrition के बारे में. In the next video, we will talk about heterotrophic mode of nutrition. Till then, keep watching and thank you.